So welcome everybody. I would like to first of all thanks everybody to join our webinar at um, which we are talking about loan against securities and its latest trends in the retail segment. I have Mr. Dipit Singh with me, who is the co-founder of AbhiLoans and NAV Finance. So Dipit, starting with the really basic question, what makes mutual fund shares or bonds a very attractive investment tool? Dipit, you're on mute. Thank you, Vidit. Good morning, everyone, for joining us on this Saturday morning. I'm sure there were other engagements that you were part of, and so thank you for taking out the time to do this. With it, I think, yeah, that's a good place to start, which basically pegs the question that why do you even invest in mutual funds or securities? To be honest with you, the answer lies in basic economics. If you look at the retail inflation in this country, it is at a good 5 to 6%. So if you're looking at very low risk products like FDs or AAA rated bonds, they'll probably give you 5.5, 6% return. So in real terms, there is no appreciation of your wealth that is happening. The other big category that Indians like to invest in is real estate. Real estate has shown to typically over the long term give 8 to 9% return, while the equity markets have given a 13% return. So if you're a long-term investor and you want to build wealth, considerable wealth, then the only way to escape inflation and rising prices is to invest in the equities markets. So I think that's the reason why mutual funds and equities are always a good place to put money in. Okay, got it, got it. So, what are loan against securities are, and why do we need it in general? Yeah. Um, So, the biggest problem in the securities space or the mutual fund space or the share space is that to make a good return on this in this asset, you have to hold the asset for a long period of time. At least you should have a 5, 6 year horizon because prices ऊपर नीचे जाती रहती है, so you can't really time the market, and that is not for people like you and me. Oh, unless you're a day trader, you shouldn't be looking at timing the market. Hmm. Now, life doesn't go according to life doesn't go according to the market timing. So you may need the money when the Hmm. prices are down. Hmm. Now, that may not be a good time to sell. That may not be you may be in a loss in the market, or that may be a time when you should actually be buying. So at that point of time, instead of selling, you can always take a loan and meet your liquidity needs. चाहे आपकी वो घर की needs हैं, education needs हैं, hospitalization needs हैं, कोई भी और आपकी consumption की needs हैं, they can be met through a loan against your securities or against your mutual funds rather than selling the mutual funds or the shares at the wrong time. I Hmm. think that is the big gap that we are trying to fill. कि अगर आपको लगता है कि right time है बेचने का तो आप बेचिए. That we are not saying that, but I'm saying that जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, उस time market may be in your favor, may not be in your favor. Correct. So if it's not in your favor, then you're better off taking a loan against your securities rather than selling them. Okay, makes sense, sir. So, is this a demand for loan against securities? मतलब is it evolved in recent years? So loan against securities with it has been around for a long time. And just before I answer that question, I would encourage the participants, if they have questions, to put it in the chat and we can keep taking it alongside. To answer your question with it, you see, loan against securities has been around for a long time. Hmm. Um, but क्या होता था कि this was like
any other product, it was only available to the ultra rich in this country. तो अगर आप के पास 1, 1.5, 2, 2.5 करोड़ के शेयर या म्यूचुअल फंड है तो बैंक आपके पीछे भागते थे उसके अगेंस्ट लोन देने के लिए. What has changed with the coming of technology and with people like us is that we can now offer this product to the common man. So आपके पास चाहे 15,000 के या 20,000 के या 50,000 के या 5 लाख के या 50 लाख के म्यूचुअल फंड हो, through technology we have been able to give the access to give you a loan against that to everybody. And that is where the demand for this particular product is increasing. But I don't think enough people know about it. So I think as people will find out more about it, the awareness will increase. We will also see improvement in the demand happening. So you talked about technology and its growth in retail market. So are there any emerging technologies or innovations happened which has helped to, make this product more available to the retail customers? So absolutely. There's a lot that is happening in this space. And so let me give you an example. अगर आप आज भी, if you go to, let's take a name of any big bank, let's say ICICI or Axis or whatever. If you want to take a loan against securities from them, आपको पहली बात उनके ब्रांच पे जाना पड़ता है, उनके साथ अकाउंट खुलवाना पड़ता है, अपने शेयर उनको ट्रांसफर करने पड़ते हैं, शेयर ट्रांसफर करने के बाद उनको फिर आप, और ये सारा प्रोसेस फिजिकल है, आपको तो पता ही है, वो पेपर साइन, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन, ये सारी चीजें. उसके बाद आपको शेयर प्लेज का डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, लोन के डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं. दिस इज अ गुड 1 week process. With technology, we have compressed this 1 week, 10-day process into a 7 to 8 minute journey. Okay. ये जो आप सारा काम मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारा काम हम एक जर्नी में 7 से 8 मिनट में कर देते हैं फॉर एनी इंडिविजुअल. हमें फर्क नहीं पड़ता आपका ब्रोकर कौन है, आपका एडवाइजर कौन है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है. We can compress this 10 days into 7 to 8 minutes and give you money in 2 hours. So that is the power of the technology. Now, the other advantage of the technology is that it doesn't matter where you are. आपके पास हाथ में मोबाइल है या आपके पास कंप्यूटर है, you can access our website, you can do this journey. You don't have to go to a bank branch, you don't have to do photocopies, you don't have to do signatures, none of that is needed. So that is the power of the technology that is driving this change in the market. Okay, तो आप मुझे बोल रहे हो कि किसी आपके बंदे की जरूरत भी नहीं है, बस मैं फोन खोलूंगा, अभी लोन्स के वेबसाइट पे जाऊंगा और 7 मिनट में मुझे मेरी मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप बोल रहे हो? Absolutely. We तो tell people that आप ये ब्रेकफास्ट के साथ करो और लंच तक आपको पैसे आ जाएंगे. अरे वाह, मतलब 3-4 घंटे में पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में होंगे. In fact, 93% of our clients are right now receiving money in less than 2 hours. वाओ, दैट्स ग्रेट. एंड आप बोल रहे थे ये प्रोसेस करने में पहले 7 से 8 दिन लग जाते थे. In fact, the people who are still doing it physically, it takes 7 to 8 days. If you go to a bank branch right now and try and do it, or even with an NBFC, if you go to any NBFC and try and do it, who are not doing it digitally, and very few people are doing it digitally. In fact, we are one of the only ones, maybe one or two that are doing it digitally. Then it still takes that amount of time. Okay. So, टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, आप थोड़ा ऑडियंस को बता सकते हैं कि क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, हाउ कैन दे अप्लाई फॉर अ लोन, और डू दे नीड एनी हेल्प, समथिंग लाइक दैट? So, frankly speaking, with it, it's a very simple process because this is targeted towards people who hold shares in mutual funds. So everybody will have a PAN card. अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, यू आर एलिजिबल. हम आपका कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, हम आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं मिनिमम देखते, नन ऑफ दैट इज. कोई हम आपके इनकम टैक्स प्रूफ नहीं मांगते. हम कोई ये जो आपको आदत है बैंक को इतना बड़ा पोथा डॉक्यूमेंट्स का देने का, वी डोंट आस्क फॉर एनी ऑफ दैट.
Okay. So the process is fairly, and the process has been designed to be fairly self-explanatory. You don't need help, you don't need any expert guidance. आप अभी लोन्स की वेबसाइट पे जाइए. Hmm. You can enter your PAN, date of birth, name and mobile, and उससे अपने आप को OTP से verify करिए. Hmm. And that process will continue, and within 7 to 8 minutes you should be able to complete the application. अपने securities pledge कर सकते हो और document sign कर सकते हो. The whole process should be finished in about 7 to 8 minutes. Obviously, if you get stuck somewhere, we Hmm. we have a full team that is available on the back end, that is monitoring the process. And आप कहीं पे भी अटकेंगे तो we'll be more than happy to kind of help out. Our people will call you, make sure that जो आपको problem आ रही है वो solve हो जाए. Okay. Okay. Got it. So let's say I applied for a loan. I want a 1 lakh loan and I have some portfolio of, let's say, 10 lakh. How can I know कि मुझे मेरे portfolio पे कितना loan amount मिल सकता है? And उसके associated interest rate अगर कुछ है, क्या है, कैसे differ करता है? So with it, the one is that in the process, automatically जब आप चूज करेंगे कि आपको कौन सी सिक्योरिटीज प्लेज करनी है, कौन से म्यूचुअल फंड या कौन से शेयर प्लेज करने हैं, Hmm. वो आपको साथ साथ बताते जाएगा कि अगर आपने 100 शेयर जैसे रिलायंस के प्लेज करे तो Okay. आपको कितना लोन मिलेगा, या अगर आपने 100 यूनिट निपॉन एसेट मैनेजमेंट ग्रोथ फंड के करे तो आपको कितना लोन मिलेगा. द सिस्टम ऑटोमेटिकली नोज द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज दैट यू हैव, and based on that it gives you an eligible loan amount that you will be getting. Now Okay. that is one. Okay. In a general sense with it, we do 75% for debt mutual funds, 65% for equity mutual funds, and between 50 and 60% for individual shares. This is so, इसका ये मतलब है कि अगर आपके 10 लाख रुपए की म्यूचुअल फंड है तो Hmm. आपको उसके आगे 6.5 लाख रुपए मिल सकता है. Okay. This is the highest in the industry right now. Okay. And the other thing is जो आपने पूछा मेरे से इंटरेस्ट रेट के बारे में. सो विद इट वी हैव टू प्रोडक्ट्स. एक प्रोडक्ट है कि जैसे आपने 10 लाख रुपए की म्यूचुअल फंड प्लेज कर दिए, Hmm. उसमें अगर आपके पास हम आपको दो काम कर सकते हैं. या तो हम आपको 6.5 लाख रुपए की लिमिट खोल देंगे. What Okay. that means is that you can take the money whenever you want, you can give it back to us whenever you want, and Okay. it is 100% flexible. There is no, you आपने लिमिट खोल के एक पैसा भी नहीं लिया तो आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं लगेगा. आपको जिस दिन जरूरत होगी उस दिन आप ले लेना, जितनी देर के लिए रखना होगा उतनी देर के लिए रख लेना. इट्स अ completely flexible product. Okay. The other product which we have designed for people who have a fixed need. This is for people who have a flexible need कि आज चाहिए कल नहीं चाहिए, things like that. Hmm. For people who have a fixed need, we have a 8%. We have a EMI product which is like your regular EMI loan. चाहे वो क्या कहते हैं, आपका ऑटो लोन हो, होम लोन हो, कोई भी Hmm. लोन, उसमें आपकी महीने की EMI बन जाती है, और आप वो EMI पे करते रहे. Okay, okay, got it. So, while you were talking, I was also thinking कि let since the share market and all declines and ऊपर नीचे होता रहता है, what if Hmm. my portfolio value declines and I have took a loan from मतलब I have a current loan, ongoing loan with AbhiLoans, तो उस केस में क्या होगा? So that is so we have obviously thought about that. Share market तो ऊपर नीचे जाती रहती है. Hmm. Uh, so if the prices are falling by anything less than 10%, Okay. हम आपको कुछ नहीं करने को कहते. We understand that this is not this is a normal movement in the market. Hmm. तो 10% ऊपर या 10% नीचे अगर मार्केट जाती है, देर इज नथिंग दैट इज नीडेड. इनफैक्ट वी कीप टेलिंग यू व्हाट इज दी, वी कीप टेलिंग यू दैट आपका प्राइस इतना चला गया है या बढ़ गया है या कम हो गया है थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस. Okay.
सो बट अगर वो 10% के ऊपर गिरती है, then we only ask you to pay us that extra amount that will bring your जो कहते हैं लोन टू वैल्यू बैक टू दी ओरिजिनल अमाउंट. तो आपको पूरा अमाउंट पे नहीं करना है वापस. अच्छा. Only the amount that is the differential between where you started and जितना वो गिर गया है. So Okay. that is the amount that you will have to repay us. Okay. Okay. So since we talked about itna about loan against security, what matlab, how do you think it is different from all those traditional products like personal loan or a business loan? And Uh, how can a consumer, uh, what are the various use cases a consumer get a loan against securities? so two question, two ways. You see, there are two types of loans in the market with it. One is a fixed end use loan. तो जैसे आपने ऑटो लोन लिया, Hmm. ऑटो लोन इज फिक्स्ड कि आपको गाड़ी खरीदने के लिए ही मिलेगा, या होम लोन लिया तो आपको घर खरीदने के लिए लोन मिलेगा. Correct. The Correct. others are open end use loans. For example, credit cards, Hmm. right? Nobody tells you what to buy with a credit card. You can buy whatever you want to buy with a credit card. Hmm. Similarly, personal loans. You are not bound to use a personal loan for any particular end use. Hmm. Hmm. Uh, this falls somewhere in between these two. So I would say कि it is the best of both worlds in the sense कि जो इसमें एंड यूज कोई फिक्स नहीं है. आपने किसी चीज के लिए पैसे यूज करने हैं आप करिए, आपने एजुकेशन के लिए यूज करने हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यूज करने हैं, छुट्टी जाने के लिए यूज करने हैं, इन फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करने हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू यूज दिस मनी फॉर यू कैन यूज दिस मनी फॉर. दैट इज नंबर वन. सो देयर Hmm. इज नो फिक्स्ड एंड यूज. Okay. नाउ जो नॉन एंड यूज के प्रोडक्ट हैं जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, वो जनरली महंगे बहुत होते हैं. Hmm. आपने Correct. आपने देखा होगा वो 24 24 30 30 32 32% इंटरेस्ट होता है. Hmm. This is much cheaper than that. So Okay. this becomes the best of both worlds. Ki you use the money what you want to use it for, but you don't pay as much as you pay for a personal loan or for a credit card loan. So that's where this category falls. Got it. Got it. So, do you With have? it, I think there's a question. Yeah, there's a So, question from Mr. गौरव हाल्दे कि इसमें कस्टमर लोन अमाउंट लेने के बाद उसका रीपेमेंट कैसे कर पाएंगे? हेलो. so Gaurav, रीपेमेंट फ्लेक्सिबल है. आपको जब जब आपके पास पैसे आ जाए, चाहे आपके पास बोनस से पैसे आए या आपकी कोई सेविंग से पैसे आए, तो आप कभी भी इनको वापस कर सकते हो. देर इज नो फिक्स्ड टाइम व्हेन यू हैव टू रिटर्न द मनी. एज लॉन्ग एज आपकी सिक्योरिटी है, शेयर्स या म्यूचुअल फंड हमारे पास पड़े हुए हैं एंड यू आर सर्विसिंग द इंटरेस्ट, you can pay the money back whenever you want without any penalty. That is number one. Obviously there are, अगर आपको लगता है कि जो आपने हमें सिक्योरिटी दी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने हमें रिलायंस के शेयर दिए और रिलायंस के शेयर बढ़ गए, so you want to now sell the Reliance shares. What we can also do is we can sell the shares that we are having for you, adjust our loan and give you the balance money. So that option is also available. ओके. गॉट इट. आई गेस गौरव जी आपका आंसर, और कुछ आपको पूछना हो तो प्लीज यहीं पे टाइप कर दीजिएगा. सो दीपित, हाउ लॉन्ग आर यू been in this business of loan against securities, and are there any success stories from customers, any use cases that you would like to share? uh, am I audible, Dipit? um, Dipit, can you hear me? With it, now I can with it. Okay, okay, I think I lost my internet in the middle.
I was just asking are there any stories that you'd like to, matlab, since you have been in business from, I think, from last year, are there any stories that you would like to share from your customers? Any specific use cases? So people have been using the money that we have for multiple things with it. So we had this guy from Calcutta who used the money to take his family on a holiday to Thailand. Okay. Now, okay, the reason for that was very simply कि uh, right. Okay. So he said very simply कि we have a मेरे को बोनस दिवाली पे मिलेगा पर मेरे को बच्चों को गर्मी की छुट्टियों पे लेके जाना है Hmm. तो वी सेड फाइन दैट इज वेरी गुड फॉर यू कि आप लीजिए लोन मई में लीजिए अप्रैल में लीजिए यू गो ऑन अ हॉलिडे इन जून जुलाई अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज व्हाई डू यू वांट टू सेल देम एंड दिवाली पे जब आपका बोनस आएगा आप हमें पैसे वापस कर दीजिए. So Hmm. this was one use case. There was another guy who wanted to buy a house and he said कि जी मेरे को 80% 75-80% तो होम लोन के थ्रू मिल रहा है बाकी मेरे को अपनी शेयर म्यूचुअल फंड बेचने पड़ेंगे. So we again said कि why do you want to sell your mutual funds? We can give you the balance 20% that you need as loan against your mutual funds. So that was also another use case. So there are multiple use cases for this product with it. And I think there are, like I mentioned, two types of use cases. One is where your need is fixed. जैसे अब वो जो आदमी होम लोन के लिए यूज कर रहा था फॉर हिज इक्विटी फॉर हिज होम लोन Hmm. that money is fixed. He needs that money for a long period of time. So he was using this product. So he was using the fixed return product. जो भाई साहब छुट्टी पे गए थे, he Hmm. was using the flexible product. So there are multiple use cases for the product. There are people who also, we have some investors in our customers who use this money कि let us say उन्होंने कहा है कि जी ये मेरे पास 20 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड है या 10 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड है ये तो मैंने 10 साल रखने हैं मैं इनको बेचूंगा नहीं ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. Hmm. पर उनको बीच में कभी कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ जाती है कोई Hmm. उनको शेयर नजर आ जाता है या कुछ आया तो वो क्या करते हैं वो कहते हैं कि जी हम इसके जो हमने ये म्यूचुअल फंड आपको दिए हुए हैं इसके अगेंस्ट में 3 महीने के लिए बोरो करके इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा पैसे कमा के आपको वापस कर दूंगा. सो वो फिर फ्लेक्सिबल है उनको जब पैसे चाहिए होते हैं वो उन पैसों को निकाल लेते हैं और जब उनकी वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है तो हमें वो पैसे वापस कर देते हैं. तो उनको फिर उस टाइम फ्रेम के लिए चाहे वो 30 40 50 दिन हो उसी के लिए इंटरेस्ट लगता है. Okay. Okay. Got it. So, Dipit, I think I'm done with my questions here. Uh, Anybody from the audience, do you have any questions? देयर आर एसके कपल ऑफ राय, हाँ, एसके राय. एक गौरव जी का एक और क्वेश्चन है, कितना म्यूचुअल फंड और शेयर होने चाहिए जिसमें म्यूचुअल फंड और शेयर के अगेंस्ट में लोन दिला सकते हैं? आई थिंक द मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? सो गौरव जी we even do loans as small as 15,000 rupees. And for that, you only need to have mutual funds worth about 25,000 rupees. So, उसके against आपको loan मिल सकता है. On the maximum side, there is no limit. मिस्टर राय पूछते हैं 8% पे लोन अवेलेबल है क्योंकि मेरी बात 13 से 16% ROI पे हुई है. राय साहब हमारा एक 8% फ्लैट रेट प्रोडक्ट है. सो बेसिकली अगर आप 1 लाख रुपए लेंगे तो आपको साल में 1,08,000 रुपये वापस करने हैं. 8% फ्लैट हो गया तो वो 1,08,000 रुपये की आपकी 12 EMI बन जाएंगी. सो 9,000 रुपये पर मंथ की आपकी EMI बन जाएगी. दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल एंड इट इज लाइव ऑन द वेबसाइट सो यू कैन यूज इट एनी टाइम यू नीड.
Anyone else would like to ask anything? I think there are no more questions, sir. Anything else you'd like to share about AbhiLoans? Uh, with it, all I would say is that if you are or your friends or family are investors in the market, and anytime you feel the need for any liquidity, please बेचने से पहले you should check out abhiloans.com and see if you can see if you qualify. Will qualify 100%, but see if the loan that you get उससे आपकी needs meet होती हैं. That would be a much better option than selling your mutual funds. सर एसके राय जी का एक और क्वेश्चन है, और 12 से 13% कहाँ लगेगा? सर 12 से 13% कहीं नहीं लगता राय साहब. हमारे दो प्रोडक्ट हैं जैसे मैंने समझाया. एक 8% फ्लैट रेट प्रोडक्ट है जहां पर आप जैसे मैंने बताया ₹1,00,000 का लोन लेंगे तो 1,08,000 लगेगा साल का. और दूसरा प्रोडक्ट है जो 16% ओडी का प्रोडक्ट है जिसमें हम आपकी लाइन खड़ी कर देंगे और आप जितना यूज करेंगे उसके ऊपर डेली के हिसाब से आपको 16% पर एनम के रेट से वो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा. एसके राय जी, आई गेस आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है. अगर आपको और कुछ पूछना हो तो प्लीज. एंड इसके अलावा if you have any questions, you can always visit abhiloans.com and drop your email at support@abhiloans.com. I'll share the details over the chat. Thank you, Dipit, and thank you everyone else for joining us for this webinar. Hopefully, it was a fruitful session for everyone. Thank you, Vidit, for doing this, and I look forward to chatting with you soon. Thank you everyone. Bye.